State Competition 2025. Today, अगर आप इस पुस्तक से कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप आपस में बात ना करें। की पॉइंट में ऑफ अप्लॉस करिए, लेकिन इतना ज्यादा कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या करता है। आप लोग इतने याद होंगे कि आगे का कार्यक्रम होता रहे। यहाँ होता है कि ठीक है। And welcome to the Science Quiz Competition 2025. Today we have 4 house participating. As you know, the Tagore House, Vivekanand House, Bose House, and the Bhava House. Before we will start this quiz competition, I would like to introduce our participants. Let's meet our participants. Good morning, my name is Ananya Raj and I am from class 7. Good morning, I am Radhika and I am from class 10. Good morning everyone. I am from Kuala Standard 9. Good morning everyone, myself Mahesh from Standard 8A. Good morning everyone, I myself Amrit Kumar from class 7. Myself Himanshu Kumar from Standard 8. Good morning to everyone, I am Karan from Standard 10. Good morning to you all, I am Karan from Standard 9. Good morning everyone, I am Kyasha from Standard 8. Good morning everyone, myself Srishti Singh from Standard 7. Good morning everyone, I am Tanman from Standard 9B. Good morning everyone, I am Dilkus Kumar from class 10. I am Srishti from class 9. Good morning everyone, I am Sunny from class 10. Good morning to you all. I am Adit, Standard 8. Good morning everyone, I am Aman from class 7. Will be conducted in 3 rounds. The very first round is the direct science round. This round typically involves the straightforward questions about the basic scientific facts and the concepts with the multiple choice options. For each correct option, you will be given 10 points. There will be no negative marking for incorrect answers. That is, the no marks will be deducted for wrong answers. If the question gets shifted from one house to the another and the participant answers such questions, they will be awarded 5 bonus points for that questions. Okay? पहला राउंड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मल्टीपल आंसर है जिसको आपको चूज करना है, और अगर गलत भी गया उसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा. ओके, अंडरस्टूड? Advances in the science. This round focuses on the discoveries, technologies, and the research in the various scientific fields. Answer these questions in a single one. For each points rule is carried just like the first round. Okay? The third round is the buzzer round to respond. Okay? बजर नहीं है, इसलिए आप अपने हाथ को उठा के थर्ड राउंड में जो पहले हाथ रेस करेंगे, जो पहले हाथ उठाएंगे, आप सबको हमारी ओर से
Question is the number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree of an object. The choice is 5, choice D 7. Formed by the two plane mirrors inclined at an angle of an object placed symmetrically between mirrors is the option first is the 5, option second is the infinite, option third is the 6, option fourth is the 7. Option E, A is a 5. 10 marks. 10 convex lens of focal length 50 centimeter is option A minus 2D, option B minus 0.5D, option C 2D, option D 0.5D. Wrong answer. Question passed to the powerhouse. What is the correct answer? Power of a convex lens of focal length 50 centimeter is minus 2D. 2D. 2D is the correct answer. 2D is the correct answer. Finds it image larger than himself. Then mirror is choice A concave, cylindric, choice B cylindrical, choice C plane mirror, choice D convex mirror. Concave. Yes, correct answer is the concave mirror. Ready? Are you ready? Yes. An object is placed at center of curvature of a concave mirror. The distance between its image and the pole is option A equal to F, option B between F and 2F, option C equal to 2F, option D greater than 2F. I repeat the question. Equal to 2F. Correct answer. Equal to the bigger. Sir. Again, powerhouse. Mainly what? The choice is, the first choice is the osmosis, second translocation, third is the active transport, fourth is the diffusion. Second option, transpiration. The wrong answer. Question shifted to the first house. I again repeat the question. The movement of water from the root hair cells to xylem occurs mainly what? The option is osmosis, translocation, active transport and diffusion. Osmosis is the correct answer. 5 marks for the first house. Next question is यहाँ से पूछ रहा हूँ. Which of these is not a function of human skeletal system? Which of these is not a function of human skeletal system? The very first choice is the blood cell formation. Choice B, protection of organs. Choice C, transport of oxygen. Choice D, body support. Again, system. Choice A, blood cell formation. Choice B, protection of organs. Choice C, transport of oxygen. Choice D, body support. क्या? Option A is the wrong answer. The question shifted towards the function of human skeletal system, the blood cell formation, protection of organs, transport of oxygen, body support.
5 marks. Awarded to Baba House. Again question asked. Which of the following correctly explains plasmolysis in plant cells? Which of the following correctly explains plasmolysis in plant cells? Choice number A. Water enters the cell due to endoosmosis. Choice B. Cell wall collapse during the water loss. Choice C. Cytoplasm shrinks away from the cell due to the water loss. Choice D. Nucleus disintegrates due to water loss. Repeat. Choice passes during water loss. Choice C. Cytoplasm shrinks away from the cell wall due to water loss. And choice D. The right answer is choice C. Choice C is the correct answer. 10 marks to one. Ready? Form water. Listen carefully. Which law is verified by the reaction of hydrogen and oxygen to form water? The very first one is the law of conservation of mass. Second, law of constant. Choice number 3, both A and B. And choice D, law of multiple proportion. Yes. Both A and B. Both A and B is the correct answer. After completion of the first round, Hawa House is at first position with 30 points. Second position, Vivekananda House 20 points. And third position, Tagore House 10 points. And at fourth position, Bosa House with 5 points. But ऐसा नहीं है कि अभी आपका क्विज खत्म हो गया है. अभी और भी बहुत सारे राउंड्स होने हैं. अभी कुछ भी हो सकता है. इसलिए ये मत समझिएगा कि कोई एक हाउस आगे निकल गया है तो वो जीत ही जाएगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अभी और भी राउंड बाकी हैं. All you are ready? पता है रूल की भूल गए, अभी तुरंत बताया था मैंने. रूल्स यहाँ. Question: Who discovered quantum theory of light? Question is shifted toward the boss house. No idea what quantum theory of light? No. Yes. So the right answer is Newton. Is the wrong answer. Quantum theory of light. Is the wrong answer. Albert Einstein is wrong answer. Quantum theory of light. Planck. Yes, the right answer is Max Planck. Planck will discover the quantum theory of light. Periodic table. Mendeleev is the correct answer. 10 marks. Next. Who discovered radium? Who discovered radium? Sir, the answer is Marie Curie. Yes, sir, Marie Curie is the correct answer. Even to the power reaching 10. ठीक है. Next. Who discovered law of electrostatic attraction? Law of electrostatic attraction. Coulomb is the correct answer. Are instrument discovery based questions. The question number 1. Which instrument is used to measure the altitude used in aircraft? Used in aircraft. Which instrument is used to measure altitude used in aircraft? हवाई जहाज में कितनी ऊंचाई पे को मापने वाला यंत्र
intensity of sound? Which instrument is used to measure intensity of? नहीं मालूम, बताना है। Intensity of sound, intensity of sound. Decibel. Wrong answer. Which instrument is used to measure intensity of sound? Huh? Audiometer is the right answer. Which instrument convert mechanical energy into electrical energy? Which instrument is used to measure rain gauge? Which instrument is used to measure rain gauge? Which instrument is used to measure rain gauge? आप सुनते हैं 93 मिलीमीटर। Wrong answer. क्वेश्चन पास है छूटेगा। Which instrument is used to measure rain gauge? No. Anyone from audience? Audience. Wrong answer. Is the eudometer. The eudometer is the correct answer. Okay. Which instrument? Wrong answer. There is no any negative mark for these questions. You may guess. आप तो मौका अगले राउंड में तो नहीं This round is only used to convert mechanical energy into electrical energy. Which instrument is used to convert mechanical energy into electrical energy? Yes, right answer is the dynamo. Thank you very much. आप लोग बहुत बार सुनते हैं डायनमो। डायनमो क्या करता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। उसमें मोशन होता है और उस मोशन तो मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 35, Taylor House 10 and Bose House 20. Okay, ready contestants? Not being available, the participants will have to raise their hand to respond to answer the questions first. For each wrong answer, 5 points will be deducted from the total points of 10. Ready? In food that also contributes to acid rain. Acetic acid. What is the preservative in the food? Second food that also contributes to acid rain.
रॉन्ग आंसर। अगर क्वेश्चन समझे होते तो अभी तक का आंसर आ गया था। क्वेश्चन का आंसर तो कीजिए लेकिन सोचने पे मजबूर करता है। द क्वेश्चन इज द व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव इन द फूड दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। द करेक्ट आंसर इज द सल्फर डाइऑक्साइड। कहां से शुरू कर सकते हैं? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्बुमिन। Run. And then to lower the melting point in the extraction of aluminum. Have you any idea? कोई idea है आपके पास? That the genetic character which get transmitted. Ready, contestant? The question is listen carefully. Pay your attention here. ध्यान से सुनिए। 10th के बच्चों के बीच में मैंने एक बार चर्चा भी किया था और ये वैल्यू ऑफ ADH सिक्रीशन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, यस, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। क्या सिम्टम है? Unfortunately, one of our teacher gets sufferings of such kind of symptoms. Sorry, please, I can't disclose. Yes, again, ready? और आपने धन्यवाद, आपका बच्चा तुमने कमाल कर दिया। ये आंसर कर दिया, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ऑलरेडी कंप्लीटेड देन। Congratulations for the winner and the runners and to all for your बेहतर प्रयास कीजिए। गलतियां होती है, आप एक मैं बात बता दे रहा हूँ, गलतियां होती हैं भी सही होने के। You know, if a person never made any mistake in their life, hello, listen, if a person never mistake, he never tried anything new. So doing mistake is an opportunity. Okay? Thank you very much. भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और एज ए ऑडियंस भी आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जाने। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ कंपटीशन में विवेका है और भाभा हाउस वो विवेकानंद विनर और भाभा हाउस रनर के रूप में हमारे बीच है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ है, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आगे भी इसी तरह क्विज कंपटीशन और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो रिजल्ट आने के बाद मैं हमारे विद्यालय के सचिव महोदय से आग्रह करूंगी कि कृपया आप लोगों को संबोधित करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये अजीत आनंद हैं, अखिल आनंद के बड़े भाई, और ये बॉम्बे में है, बैंक में म्यूजियम है। वो आए हुए थे संतोष से, हम इसीलिए बोले क्या कि आप बांट दो तो मैं आग्रह करूँगी आज के मुख्य अतिथि श्री अजीत आनंद सर से कि जो भी रनर और विनर स्टूडेंट्स हैं उन्हें सम्मानित करें। तो मैं सबसे पहले रनर टीम 7 से स्मिता और तन्मय, रियासा कुमारी, तन्मय कुमार और दिलखुश, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। और सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे ताकि आपकी फोटोग्राफी हो जाए। एक साथ सामने जाएंगे मंच पर और खड़े होकर फोटोग्राफी कर लेंगे।
7, 8, 9 क्लास से ये सभी बच्चे पार्टिसिपेंट थे 10th क्लास से। क्विज कंपटीशन कोई आसान कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए मेंटल गेम है और तुरंत ही अपने अच्छे मतलब IQ का जो है प्रदर्शन करते हैं। तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम प्रिंसिपल सर से संतोष सर से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अमित सर से, ये इस तरह का कंपटीशन हमेशा होता रहे, जो कि लड़कों का मनोबल भी बढ़े और ज्ञान भी बढ़े। धन्यवाद।